Hello everyone, this is Gavneet Kaur Pruthi from my clinic, that is Talking Point Psychology Clinic in New Delhi. I am RCI registered clinical psychologist running my clinic since 2015, ex-assistant professor clinical psychology from Maulana Azad Medical College. Now dear parents, that I want to give very important information to every one of you that if your child has virtual autism, वर्चुअल ऑटिज़म का मतलब ये होता है कि आपका बच्चा ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से उसकी स्पीच में डिक्लाइन आ गया है, बच्चे की सोशल इंटरेक्शन में डिक्लाइन आया है, बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अंडरस्टैंडिंग में डिक्लाइन आया है थ्रू द लॉट ऑफ यूसेज ऑफ फ़ोन. सो he or she has developed virtual autism. So the main point which I want to convey to all the parents is that if your child has been diagnosed with virtual autism and if you think that the virtual autism can go away if you have taken back the phone from the child, you have reduced the screen time of the child, then it is not necessarily that the virtual autism will go away like this on its own. Okay, because you need to take the counseling sessions, the behavior therapy sessions, parental counseling sessions from the clinical psychologist, and I am a very experienced clinical psychologist in Janakpuri running my own practice. So you can contact me. I'll mention my numbers below. So it is not that you have stop giving the phone to the child, that the child will not his or her speech will develop, the child's social interaction will develop. The social interaction will develop only when you will take the therapy, you will take the inputs from the clinical psychologist that what are the ways in which the social interaction has to be increased. आप सिर्फ बच्चों के साथ उनको रख के सोशल इंटरेक्शन नहीं बढ़ा सकते कि अगर बच्चे उनके साथ नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, हमें आपको कुछ टेक्निक्स बतानी पड़ेगी कि किस तरीके से उसको दूसरे बच्चों के साथ घुलना मिलाना है, क्या एक्टिविटीज़ से ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन बढ़ सकती है, कौन सी एक्टिविटीज़ आपको अवॉइड करनी है जिससे कि सोशल इंटरेक्शन हैम्पर हो रहा है. सो दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू टेल इन दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन and keep sharing and keep learning in life, because we are always a learner in this life. Thank you so much.